Obviously, someone's making money here, but unfortunately, it's not her or them or him. There's something wrong here. An obvious need for a different kind of trade, a fairer trade. पश्चिमी देशों से हमारे देश में आया है, पर बेसिक आइडिया जो है वो गांधीयन फिलॉसफी है। गांधीयन फिलॉसफी ऑफ सर्वोदया, सर्व का उदय जिसमें है, उस तरह की हमारी जीवन प्रणाली जो है उसी को फेडरेट कहते हैं। Okay, so let's see what happens if we change our shopping habits a bit. We have been woodcarvers since our great-grandfather's time. Those days, we used to sell our products through brokers. So, we were getting very little money for our labor. This made life extremely difficult. कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो उधर शिल्पा की तरफ से एक फ़ोटो, पिक्चर या सैंपल कुछ देते हैं, तैयार करके लेके जाके शिल्पा वालों को देते हैं, ये इतना पड़ेगा। यही चीज़ अगर बाज़ार में ले जाके मिसाल के तौर पर 20 रुपये में लीजिए बोले तो 20 रुपये में नहीं चलेगा, ये 10 रुपये या 15 रुपये में दो बोल के बोलेंगे। अगर शिल्पा के पास हम लड़के ले सकते हैं। India's large percentage is unorganized sector, and unorganized sector has no laws, no values. You can be exploited at any time. There is contractorship, subcontractorship, so we fight against them. जहाँ हम पहले काम करते थे वहाँ ना तो सफाई का कोई वो था, ना कोई हवा की सुविधा थी, गंदगी है उसी में बैठना पड़ता था। अगर उन्हें 10 रुपये का काम है 5 रुपये देना तो 5 ही रुपये में देना होगा, वो भी समय पे नहीं मिलता था। बाई चांस कोई ज़रूरत पड़ गई तो नहीं देते थे, तो ये हमने जो मेहनत की उसका ही नहीं देंगे तो एक्स्ट्रा क्या देंगे। कितने काम करते हो? He is working 12 hours. देखो कितना पैसा मिलता है? Oh, he is getting 1,100 rupees per month. इधर शिल्पा में जो है पैसा पहले से मिल जाता है, पहले से ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर के साथ हमारे को पैसा भी देते हैं। बाजार में नहीं देगा, जाओ माल लेके आओ, बाद में पैसा लो बोलता। Once we receive the orders and the work is confirmed, we receive at least 50% of the money as an advance from fair trade buyers. यहाँ पे पता है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर ये भी नहीं है कि कोई लेडीज़ में और जेंट्स में कोई फ़र्क है। शिल्पा के लिए जब काम शुरू किए उसके बाद थोड़ा इम्प्रूवमेंट में आए, मतलब किराए के मकान में थे, अपना ख़ास घर बनाए, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कॉलेज बीकॉम वो कर रहे हैं, और एजुकेशन के लिए पैसे भी शिल्पा ट्रस्ट से आते हैं। Previously, we were treated as laborers, but now, because of our skill, we are called artisans.
गीत गा रहे हैं आज हम रागिनी को ढूंढते हुए गीत गा रहे हैं आज हम रागिनी को ढूंढते। फेटेड में ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जो है वो विमेन के साथ काम कर रहे हैं, या तो जो हैंडीकैप्स है या लेप्रेसी पेशेंट्स है या कई लोग विडोज़ के साथ या इस तरह से काम कर रहे हैं। उसके पीछे का एम यही है कि हमारे सोसाइटी का जो पिछड़ा हुआ तबका है उनके साथ काम करके उनको हम किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। Okay, so now the obvious question. Does helping all these people in effect mean we buy poorer quality products? By charity or by sympathy, people will buy once, twice, but not repeatedly every time. We are getting repeated orders for last 35 years, which proves their satisfaction that they are getting by the quality which we give stress on every step of our production. जिंदगी का दौर आज से दोस्तों को हम सिखाएंगे। On the name of fair trade, we cannot go on selling the same items. We have to have all the criteria of fair trade as much as possible, but at the same time, consumer needs new designs. It may be of the stone waste beads, or we make of the bone. You know, this is a new design, and we should really, if we want to sustain ourselves, we want to exist, we must give as much emphasis on new designs. In this regard, FTF-I has really helped us. We participated in different market exposure programs, and we got the idea of the trends from very eminent designers. For the first time, we could go and witness the market, and after coming back, our sale increased like anything. And of course, fairer trade means fair to the next generations too. So there's an effort to keep it environmentally friendly. There's a lot of waste when we make a one piece. Can we do something out of this? For example, when we were making this stone product, we realized that we have a lot of small pieces of stones there. I thought, why not join them with the stone? And you can see we are able to make this chip pastel and mortar. बनाए गांव डुबोए कारखाना बनाए जंगल काटे खादान कोड़े सेंचुरी बनाए बांध बनाए गांव डुबोए कारखाना बनाए जंगल काटे खादान कोड़े सेंचुरी बनाए. What can you do with the waste? And certainly we can do a lot, and this photo frame is an example, and we are selling it. The environment doesn't take care of itself. People take care of the environment. And in particular, in the case of agriculture, farmers are directly connected to care for the environment. India's seen a huge economic boom over the last 10 or 15 years. And for a lot of people in the country, the middle and upper middle class, it's meant opportunity like never before. And that's a great thing. But I think everybody knows that that opportunity hasn't trickled down to everyone in the same way. During the same boom period, since '97, it's estimated that over 2 lakh farmers have committed suicide out of desperation. Now, we would expect that everybody, including farmers, would take care of the environment. But when you're talking about someone who's extremely poor, who's struggling to get by, then it's extremely difficult for them to put together the resources, and they don't necessarily always have the techniques at hand to be able to invest in caring for the environment. And so what fair trade is about vis-a-vis the environment is empowering farmers with the resources and the knowledge to be able to farm sustainably, take care of the environment, and make sure that they have the environmental resources for their own sustainability and their own livelihood for the future.
ये जो ज़मीन है जो हमारे पुरखों ने हज़ारों साल से हमारे पास बचा के लाई है, तो उसको अगर हमें और हज़ारों साल अगर चलाना है तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक करना है। रासायनिक जो हम यूज़ करेंगे उसमें आप 3 साल 4 साल 10 साल तक अच्छा काम कर सकेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उससे आगे बढ़ेंगे नहीं बल्कि नीचे नीचे आ जाएंगे। पहले जो 3 साल होते हैं तो ऐसा होता है आप ऑर्गेनिक करना शुरू कर दिए तो आप डायरेक्ट शुरू कर दिए तो ऑर्गेनिक नहीं हो जाते हैं। तो शुरुआत में जो हमारा 2 साल थे तो वो टाइम में ऐसा था कि आपका कॉटन अगर कन्वेंशनल भी है तो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, ऑर्गेनिक प्रीमियम 3 साल बाद मिलेगा। तो ऑर्गेनिक कॉटन पर वो प्रीमियम मिला था तो हमने हमारे ग्रुप ने बैठ के सोचा, बहुत सारे लोग हमारे गांव में कि बच्चों के पढ़ाई के लिए गांव छोड़ के बाजू में एक ज़िला है वहाँ पर जाके रहते थे, या तो बच्चों के लिए आना जाना करना बहुत मुश्किल बात थी। तो इसके हिसाब से एक छोटा प्री प्राइमरी स्कूल शुरू करने का बात आ गया। तो उससे गांव का फायदा हो गया कि गांव के लोग शहर में जाना बंद हो गए, और गांव में अगर पैसे वाले लोग गांव छोड़ के जाते हैं तो वो गांव की पोजीशन खराब हो जाती है। अगर मैंने अगर ऑर्गेनिक नहीं किया तो मेरी आगे की जो पीढ़ियाँ है तो उनको मशीनों के साथ काम करना पड़ेगा, खेती के साथ नहीं। गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं, गाँव छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब। So now it's fair trade, environmentally friendly, and good quality. So what exactly is keeping us from these products? Oh yes, the price. But let's see whether we are really paying that much more. We are selling products from a range of about 100 rupees till about 2000 rupees. It consists of home decor, it consists of functional items. And we want to emphasize on the karigar, we want to emphasize on the actual exquisiteness of how the material is done and what it is done with. So I'll just give you an example of a product which I have here in my room, and this is like a leaf, yeah, that we normally sell. Now we sell this at 695, but maybe you would get it in a big bazaar at probably 200 rupees less. And the reason why they sell it less is probably because the quality differs. It is much lighter in weight. It wouldn't have that much of work on it. But people would definitely want to go and buy there. But in a Bombay store, it would be probably double priced of what we are selling it at. And that's because Bombay store is a brand. In Treasury, it would sell probably 3 times of what we are selling. Once again, Treasury is a brand. There wouldn't be a quality difference between Treasury and our product. It will be the same, except that the clientele is willing to pay a higher price because it goes with a brand. So they would think that buying it from Karigar is below their dignity in comparison to buying it from Treasury. असल में हम जिसको ज़्यादा पैसे देना कहते हैं वो ज़्यादा पैसे कभी हम देते ही नहीं हैं, क्योंकि हमारा कारीगर जब गिनती करता है अपनी चीज़ का तो उसकी जो गिनती है वो कभी भी करेक्ट होती ही नहीं है। वो जिस घर में बैठ के काम कर रहा है वो कभी भी उसका भाड़ा नहीं गिनता, कभी उसका इलेक्ट्रिसिटी नहीं गिनता, बीवी जो उसको बार बार बीच में आके मदद करती है, बच्चे जो हेल्प करते, उन सारी चीज़ जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कहते हैं वो कभी भी उन कारीगरों को पता ही नहीं चलता है कि ये उनकी एक्चुअल कीमत क्या है। तो फेयर ट्रेड के ज़रिए हम उनको ये समझाते हैं कि तुम्हारे प्रोडक्ट का एक्चुअल कॉस्टिंग क्या है। कंज्यूमर को भी ये गिनती नहीं पता है कि सस्ता खरीद के हम कितना नुकसान अपने आप को कर रहे हैं, हमारे पूरे देश को कर रहे हैं, हमारे पर्यावरण को कर रहे हैं। तो फेयर ट्रेड जो है वो दोनों तरह से अवेयरनेस की बात है, कंज्यूमर को भी अवेयर करता है एज वेल एज कारीगर को भी अवेयर करता है। Let's take for example a shirt like this that maybe you would pay $1,000 for. Now as a consumer you're paying $1,000 for it. There's actually maybe $40 worth of cotton in that shirt.
So let's say we talk about giving the farmer an extra $10, for example. Now, for someone who's paying $1,000 for this shirt, an extra $10 is not going to make that much of a difference. But if you talk about giving a farmer who's earning $40 for the cotton in this shirt an extra $10, that's a huge difference in his income. और उसके साथ साथ वो हमें भी एज अ कंज्यूमर हेल्प करता है कि वही 10 रुपये में हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्प करते हैं, वही 10 रुपये में हम हमारा जो देश है उसको एजुकेटेड बनाते हैं, वही 10 रुपये में हम हमारा जो देश है उसको हेल्दी बनाते हैं। तो दोनों ही तरफ से ये 10 रुपये फ़ायदा करते हैं, न कि सिर्फ कारीगर को, पर एज अ कंज्यूमर हमें भी। पेप्सी 2 रुपये में बनती है, 20 रुपये में हम खरीदते हैं, कभी नहीं सोचते हैं। और उसके एवज़ में कंपनियां हमको बहुत अच्छा वो भी देती है कि ये 2 की जगह 20 क्यों देना है, क्योंकि हमें शेयर होल्डर्स को हमारा मुनाफा दिखाना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको चाहिए, या हम जो एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस कर रहे हैं वो चाहिए, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस चाहिए, वो चाहिए। हम वो सारी चीज़ें आराम से मान लेते हैं। जब कारीगर की बात आती है तो यही सारे खर्चे हम कभी नहीं सोचते हैं कि उनको भी तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। उनका इन्वेस्टमेंट जो है अपनी कारीगरी है, तो उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या देते हैं हम? In spite of this, there are consumers that seem to think that the price they pay for fair trade products gives them their absolute money's worth. गीत गा रहे हैं आज हम रागिनी को ढूंढते हुए। We are supplying to domestic commercial buyers regularly since last 10 years, and we are competing in the tender every year. We are getting the tender. Companies like ITC, Taj, Hayat, LIC, and many other to mention. Ultimately, the consumer does come back to us because he would compare the value of buying the